Hello everyone. I Lieutenant Shubham Pratap Singh, Assistant Professor in School of Management, Babu Banarsi Das University, Lucknow. So in this video lecture, I'm going to cover two very important topics of production and operations management. So this video lecture will cover the various aspects of material management as well as the inventory management. So let's start with the material management. Okay. So when we talk about the material management, so material management is a function which aims for integrated approach towards the management of materials in an industrial undertaking. So in any industrial undertaking, there will be a requirement of materials, and the management of these materials will be done with the concept of a material management. So managing all the materials which will be required in an industrial undertaking will be known as the material management. So when we talk about the objective of material management, so its main objective is cost reduction and efficient handling of materials at all stages and in all sections of the undertaking. So the main objective of the material management is to reduce the cost as well as the efficient handling of materials at all stages and in all sections of the undertaking. Because the cost reduction is very important with respect to the profitability of the business, because the basic principle is minimizing the cost, maximizing the profits. So the basic purpose of material management is to reduce the cost. So when we talk about the functions of material management, so its functions includes several important aspects connected with materials, such as purchasing of materials, how we can purchase material, how much quantity will be purchased, storage of materials, inventory control, material handling, standardization. These are the some functions which will be included in material management. Then the scope of materials management. So when we just a minute. So when we talk about the scope or functions of materials management, so before discussing the scope or functions, I'm going to tell you about the very important definition of materials management, which has been given in this slide. So material management is defined as the function responsible for the coordination of planning, sourcing, purchasing, moving, storing, and controlling materials in an optimum manner so as to provide a pre-decided service to the customer at a minimum cost. So it is defined that the function responsible for coordination of planning means how we can plan, what we can plan, and sourcing from where the materials will be purchased, purchasing of materials. Before purchasing we can do some purchasing research and all, then moving, storing, and controlling materials in an optimum manner. So these are the basic functions of the materials management or the scope of materials management. But the objective behind all these functions or scope is minimizing the cost or minimum cost. So from the definition, it is clear that the scope of material management is very wide. So the functions of material management can be categorized in the following ways. What are the following ways? We'll show in the next slide. So as you can see, here it is scope of materials management. So as you can see, the first is material planning and control, or it is also known as the material requirement planning. If whatever the quantity of materials required, that will be planned in very effective and efficient manner. Then the next step, purchasing of materials by doing some purchasing research and by adopting some other methods of purchasing. Then stores management, how we can store our materials in our stores, then as well as the inventory management, that this will also include the inventory control. And some of the other related functions are standardization, simplification, specification, value analysis, ergonomics, just in time. So these are the some scope of materials management. So then the next one is the inventory control. But before moving towards the inventory control, I'm going to cover the some of the important aspects of the inventory management or the inventory. So when we talk about the inventory, so what is the inventory? Inventory generally refers to the materials in stock.
means whatever the materials or the inputs required for final product that will be in stock, that will be known as the inventory. Means जो भी stock हमारे पास in the form of material है for producing the final product, that will be known as the inventory. It is also called the idle resource of an enterprise. It is an idle resource of enterprise, but when we talk about the idle resources, so this include the 4M of production, that is man, machine, material, and money. So inventory is also a material. This will be required for producing the final product. So it is also called the idle resource of an enterprise. And the inventories represent those items which are either stocked for sale. मे बी इन्वेंट्रीज उन आइटम्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है विच आर आइदर स्टॉक फॉर सेल, जिनको हमने स्टॉक करके रखा है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, और दे आर इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मे बी वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हो सकते हैं, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स, मीन वो आपके रॉ इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स के भी फॉर्म में हो सकते हैं विच आर येट टू बी यूटिलाइज, जिनको आप इन कमिंग पीरियड और इन फ्यूचर पीरियड उसको यूटिलाइज करें. कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें कि सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. शुगर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बेसिकली इन्वेंट्री दोज आइटम विच आर आइदर स्टॉक फॉर सेल, कि फाइनल आपने शुगर का मैन्युफैक्चर कर लिया, शुगर की मैन्युफैक्चरिंग हो गई और उसके स्टॉक को अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ सेल. सो दिस विल बी द फर्स्ट कैटेगरी, दोज आइटम्स विच आर आइदर स्टॉक फॉर सेल. ये तो आपका फर्स्ट हो गया. देन दे आर इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. सो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा कि बेसिकली शुगर के प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, शुगर केन रिक्वायर्ड होता है. शुगर केन से शुगर को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको कई सारे प्रोसेस और कई सारे स्टेप्स से गुजरना होता है. सो बेसिकली आपका स्टार्ट तो हो गया शुगर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, बट अभी फाइनल शुगर जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है. दैट विल बी नोन एज द वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस है, सो बेसिकली इट विल बी कंसीडर्ड एज दे आर इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. और द लास्ट इज दे आर इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स. सो मटेरियल्स आपके लिए क्या है, शुगर मैन्युफैक्चर करने के लिए शुगर केन विच आर येट टू बी यूटिलाइज, जिनको हम अपनी शुगर को मैन्युफैक्चर करने के लिए फर्दर यूटिलाइज करें. सो these categories I think understood to everyone. And the next is the interval between receiving the purchased parts and transforming them into final products varies from industries to industries depending on the cycle time of manufacture. So when we talk about the cycle time of manufacture, so it will be differ from one industry to the another industry. Cycle time की अगर हम बात करें, so it is the interval between receiving the purchased parts and transforming them into the final product. Means जिस डेट में वो हमको वो पार्ट और वो मटेरियल रिसीव हुआ है, उस डेट से फाइनल प्रोडक्ट तक उसके ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस का पीरियड है, that will be known as the cycle time of the manufacture. So it will differ from one industry to the another. So it is therefore necessary to hold inventories of various kinds to act as a buffer between supply and demand for efficient operation of the system. So it is therefore necessary to hold inventories of various kinds to act as a buffer between supply and demand for efficient operation of the system. As I have already told you about the cycle time of the manufacture. So the cycle time exists where, so it is therefore necessary to hold some inventory. Means कुछ inventories आपको अपने पास hold करके रखने पड़ेंगे, so that it will act as a buffer. Buffer basically क्या है कि to meet the supply and demand का need. कि suppose आपको final product बनाने के लिए materials की requirement आज है, but वो आपको market से purchase करेंगे तो वो after 2 days और after 3 days आपको मिलेगा. So उस duration में आपका जो production होगा that will be stopped. Means आपका production affect करेगा. So this inventories which will be kept by the industries or by the businesses or business enterprises, that will act as a buffer between supply and demand. कि जब भी आपको demand होगी तो आपको जो supply नहीं भी मिल पा रही है, तो जो भी आपने hold करके रखा हुआ है और जो already आपके पास available है material, that will be provided against the demand by the business undertaking. So thus an effective control on inventory is a must for smooth and efficient running of the production cycle with least interruptions. So inventory control is also a very important aspect for smooth and efficient running of the production cycle. Basically production cycle को run करने के लिए with least interruptions it will be required, that will be the
इफेक्टिव कंट्रोल ऑन इन्वेंट्रीज, क्योंकि अगर हम इन्वेंट्रीज पे इफेक्टिव कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उस केस में हम अपनी प्रोडक्शन साइकिल को एफिशिएंटली और स्मूथली रन नहीं कर पाएंगे विद लीस्ट इंटरप्शंस, क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा प्रोडक्शन में कोई भी इंटरप्शंस नहीं होने चाहिए, दैट विल बी कंटिन्यू. So here is the another slide. As you can see, reasons for keeping inventories. So here you can see reasons for keeping inventories. So first is to stabilize production. So the most important reason for keeping inventories with the business undertaking or with the industries, that is to stabilize production. कि जो आपका production है that will be stabilized by keeping inventories with the business undertaking. And the another reason for keeping inventory is to take advantage of price discounts. As you all know कि जब भी हम bulk में purchases करेंगे और bulk orders करेंगे for the purchase of materials, then this will provide you the advantage of the price discount, क्योंकि अब जब bulk order करेंगे तो आपको price discounts भी available होंगे. So next is to meet the demand during the replenishment period. Replenishment period में भी आपकी जो भी demand है उनको meet out करने के लिए they will help out. Then the next is to prevent loss of orders or loss of sales. So it will also prevent loss of orders or loss of sales. So I'm taking an example for explain you all, that is the preventing loss of orders. So how it will help you out in preventing the loss of orders. So as you know, in case अगर आपको एक कोई Mr. X से जो है एक order receive हुआ for producing the 10,000 products of a particular product. So basically आप उन 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करके तभी कस्टमर को और मिस्टर एक्स को डिलीवर कर पाएंगे जब आपके पास sufficient amount of inventories or materials already available होगा, which will be required for producing the final product or the product which will be required by the Mr. X. तो Mr. X को जो product required है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो भी मटेरियल इनपुट रिक्वायर्ड है, अगर वो मटेरियल इनपुट्स और वो इन्वेंट्रीज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप उस सेल को जो है नहीं कर पाएंगे और मे बी उस ऑर्डर को नहीं ले पाएंगे, तो दैट विल बी लॉस ऑफ ऑर्डर. तो बेसिकली जब आप आपके पास इन्वेंट्रीज रखते हैं, सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ इन्वेंट्रीज के स्टॉक्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं, तो उस केस में यू कैन प्रिवेंट लॉस ऑफ ऑर्डर्स और लॉस ऑफ सेल. Then the another is to keep pace with changing market conditions. So changing market conditions के साथ में आपको चलने के लिए भी कभी कभी आपको इन्वेंट्रीज मेंटेन करके रखने होते हैं. ये मे भी आपकी मार्केट कंडीशंस में चेंज होने की वजह से आपकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है मटेरियल्स की, मे बी प्राइस में कोई चेंज हो गया, तो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल. सो टू कीप पेस विद द चेंजिंग मार्केट कंडीशन, की मार्केट कंडीशन अगर चेंज भी होती है तब भी आपके प्रोडक्शन पे कोई भी इंटरप्शंस ना. So that will be also a reason for keeping inventories. And the last is sometimes the organizations have to stock materials due to some other reasons like supplier minimum quantity condition. In case कुछ एक suppliers ऐसे भी होते हैं जिनका एक minimum quantity condition होता है कि मे बी आपको 100 यूनिट रिक्वायर्ड है बट हम मिनिमम क्वांटिटी 500 से कम क्वांटिटी सेल नहीं करते हैं, सो यू हैव टू परचेज दैट क्वांटिटी, क्योंकि वो मिनिमम क्वांटिटी का उनका कंडीशन है, उतना आपको मिनिमम परचेज करना ही है, उससे कम वो सेल नहीं करेंगे. सो दैट विल बी आल्सो अ रीजन फॉर कीपिंग इन्वेंटरीज. देन द नेक्स्ट इज सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स. सो कुछ एक मटेरियल्स ऐसे होते हैं दैट विल बी अवेलेबल सीजनली, और वो सीजनल अवेलेबल होते हैं, सो उनका भी स्टॉक करके हमको रखना होता है. दैट विल बी आल्सो रीजन फॉर कीपिंग इन्वेंटरी. देन सडन इंक्रीज इन प्राइसेस, so that will be also a cause or the reason for keeping the inventory. So I think what are the reasons for keeping inventories within industrial undertaking or a business undertaking? I think it is clear to everyone. So next is functions of inventory.
So functions की अगर हम बात करें, so the first is to decouple or separate various parts of the production process. It is the one of the important function of inventory. So it separates the various parts of the production process. This is done to avoid any kind of unnecessary effect on production due to fluctuations in supply. In case अगर supply में कोई fluctuations आती हैं, तो that will not affect the production. So next is to decouple the firm from the fluctuations of demand and provide a stock of goods that will provide a selection for the customers. So this will also a function of inventory. And the next is to hedge against inflation and upward price changes. So these are the three basic functions of the inventory. And the next is types of inventory. So इस टॉपिक को आप थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ इन्वेंटरीज की बात करें, इन्वेंटरीज मैं आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं इन्वेंटरीज आपके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रॉ मटेरियल इन्वेंटरी। सो मटेरियल्स दैट आर यूजुअली परचेज्ड बट येट हैव टू एंटर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मींस जो मटेरियल्स यूजुअली हमने परचेज तो कर रखे हैं बट दे हैव टू एंटर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बट उनको हमको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चर प्रोसेस के साथ गुजरना होगा, क्योंकि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे देन दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। सो मटेरियल दैट आर यूजुअली परचेज्ड बट येट हैव टू एंटर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिनको अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एंटर करना है। दिस इन्वेंटरी इज यूज्ड टू डिकपल द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द सप्लायर। So this will decouple or separate the manufacturer from the supplier. So it tries to eliminate the supplier variability by in quantity, quality, delivery time, so that separation is not needed. So the next is work in progress. Work in progress in the inventory, as I have already told you or the name suggests. So the products and components that are no longer raw materials, जो अब करेंटली जो है वो रॉ मटेरियल नहीं है एंड हैव अंडरगॉन सम चेंजेस। जो शुरुआत में जब हमने उनको परचेज किया था तब तो वो रॉ मटेरियल थे, बट दे हैव अंडरगॉन सम चेंजेस बट आर नॉट कंप्लीटेड। बट उनका जो फाइनल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। So it exists because of the time it takes for a transformation, which is not yet completed. So it exists because of the cycle time. If cycle time is reduced, then inventory levels are also reduced. So work in progress आपका वो इन्वेंट्री होते हैं जो बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रोसेस को जा चुके हैं, उसमें कुछ चेंजेस भी हो गए हैं बट अभी वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए, दैट विल बी नोन एज द वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे कि मैंने आपको शुगर केन का एग्जांपल दिया था कि शुगर फाइनली हमको शुगर मैन्युफैक्चर करने के लिए शुगर के इनको कई सारे प्रोसेसेस थे, कई सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजरना होता है तभी वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली कुछ एक स्टेप्स तो उसने क्रॉस कर लिए हैं बट अभी भी वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इट एग्जिस्ट बिटवीन द एंटरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सो इट exists just because of the cycle time. As you know, every product having a different cycle time or a different time for transforming the materials into the final product. So it's just because of the cycle time. So if the cycle time is reduced, then inventory levels are also reduced. Then the next is maintenance, repair, or operating supply inventory. So maintenance, repair, operating supply inventories are necessary to keep machine and processes productive. Machine और जो भी processes हैं उनको productive बनाए रखने के लिए हमको maintenance inventories की भी requirement होती है. They exist because the need and timing for maintenance and repair of some equipment are unknown. कब हमको कौन से maintenance की किस machine में repair की requirement होगी, it will not be known by anyone. So that's why these inventories are kept in the organization. Then the next is finished goods inventory. And as I have already told you that it is the storage of the item which are complete products and ready to be shipped. They are the complete product, वो complete product है, but they have to be shipped or they have to be sold or they are ready to be shipped. So these will be considered as a finished goods inventory. So the next topic is meaning of inventory control. So inventory control is a very important topic of the production and operations management or in manufacturing industries. So manufacturing industries में inventory control का अपना एक बहुत ही important role होता है. So we can start with the inventory control. So it is
a planned approach of determining what to order, when to order, and how much to order, and how much to stock, so that costs associated with buying and storing are optimal without interrupting production and sales. So it is a planned approach of determining what to order, हमको क्या order करना है, when to order, कब order करना है, how much to order, and how much to stock, so that cost associated with buying and storing are optimal without interrupting production and sales. Means हमको production और sales को without interrupt किए, बिना interrupt किए अपनी जो cost है, maybe buying or storing जो भी cost है, that will be optimum, and it will also answer some questions such as what to order, when to order, how much to order, and how much to stock, so that the cost will be optimal. So this will be known as the inventory control. So inventory control basically deals with two problems. When should an order be placed? That will be known as the order level. कि हमको कब एक order place करना है materials को purchase करने के लिए. Then how much should be order? हमको कितना purchase करना है? That will be known as the order quantity. So these questions are answered by the use of the inventory models. We can use the various types of inventory models such as basic economic order quantity, and all of the some of the other models are also available for inventory control. So the scientific inventory control system strikes the balance between the loss due to non-availability of an item and cost of carrying the stock of an item. So basically, scientific inventory control system is just the balance between the loss due to non-availability of an item. Basically, अगर एक भी item आपके पास material का नहीं available है, that will cause a loss. So that will be the uh, be help out by using the inventory control, or that will be resolved by using the inventory control. So scientific inventory control aims at maintaining optimum level of stock of goods required by the company at minimum cost to the company. So it's all about the inventory control. So here is the objectives of inventory control. So there are various objectives of inventory control. So here you can see first is to ensure adequate supply of products to customer and avoid shortages as far as possible. So it is the basic or the first important objective of the inventory control, to ensure adequate supply of products to customer and avoid shortages as far as possible. So adequate supply of products will be ensured by using the inventory control to the customer, and it also help out to avoid shortages of the final products, or avoid shortages of the products to the customer. As you know कि अगर कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और डिमांड है, उसको वो प्रोडक्ट चाहिए, अगर आप उसकी एडिक्वेट सप्लाई नहीं कर पाएंगे, then he will switch over to the another product. So it will ensures the adequate supply of the products to customer and avoid shortages as far as possible. This is the one of the objective of the inventory. Then the next is to make sure that financial investments in inventories is minimum. कि इन्वेंट्रीज में जो हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है और जो हमारा फंड्स का इन्वेस्टमेंट है, दैट विल बी मिनिमम. क्योंकि अगर हम ज्यादा से ज्यादा पैसा अगर हम इन्वेंट्रीज में अगर इन्वेस्ट करेंगे, देन द वर्किंग कैपिटल विल बी ब्लॉक्ड. तो अगर वर्किंग कैपिटल आपकी ब्लॉक हो जाएगी, सो आप डे टू डे ऑपरेशंस एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द वर्किंग कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस. सो द वर्किंग कैपिटल is blocked to the minimum possible extent by using the inventory control. Minimum possible extent में ही हमको working capital use करनी है for the purpose of the inventories or investment in inventories. ठीक है. So basically क्या है कि हमको कम से कम पैसा ही inventories में लगाना है, so that कि हमारा कम से कम working capital block हो in inventories. That will be possible using the inventory control. So the next objective is efficient purchasing. Efficient purchasing can be done by following the various steps such as purchasing resource, different methods of purchasing, and the storing, consumption, accounting for materials. These are the important objectives of the inventory control. And the next is to maintain timely record of inventories. The timely record of inventories will also be maintained using the inventory control of all the items, and to maintain the stock within the desired limit. Basically, whatever the desired limits are for different types of materials, so that will be maintained
by using the inventory control. So उन stocks को हम maintain कर पाते हैं just because of the inventory control. And the next is to ensure timely action for replenishment. Replacement में भी आपका जो timely action है that will be taken by using the inventory control, or if possible just because of the inventory control. So it is the objective of the inventory control to ensure timely action for replenishment. Then the next is to provide a reserve stock for variation in lead times of delivery of material. In case in some cases, in the cases of the lead time, कि आपकी जो डिलीवरी ऑफ मटेरियल्स होती है दैट विल बी डिलेड और वो मटेरियल आपको टाइमली डिलीवर नहीं हो पाया, सो देयर विल बी अ प्रोविजन और इट विल प्रोवाइड अ रिजर्व स्टॉक फॉर वेरिएशन, कि अगर इन केस आपकी टाइमली डिलीवरी नहीं हुई तो हमारे पास रिजर्व स्टॉक्स हैं, उन रिजर्व स्टॉक्स को हम यूज करेंगे फॉर कंटिन्यूइंग दी प्रोडक्शन. बस हमारे जो प्रोडक्शन है, जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है दैट विल बी कंटिन्यूड और उसमें कोई भी इंटरप्शंस ना. And the last objective is to provide a scientific base for both short-term and long-term planning of materials. So it will also provide a scientific base for both short-term and long-term planning of materials. कि हम short-term, long-term planning भी कर सकते हैं by using the inventory control technique. So that's all for objectives of inventory. So let's start with the benefits of inventory control. So here are the some benefits of inventory control. As you can see, the first point is improvement in customers' relationship because of the timely delivery of goods and services. As I have told you in objectives of inventory control, to ensure the adequate supply of the products to the customers. That will be the first objective of the inventory control. So improvement in customers' relationship just because of the timely delivery of goods and services. कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स को और सर्विसेज को अगर टाइमली डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर को, तो देयर विल बी अ इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर रिलेशंस. क्योंकि अगर आप टाइमली किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर करेंगे, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, देन इट विल इम्प्रूव द कस्टमर रिलेशंस. बट इट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वेंटरी कंट्रोल. So it is one of the benefit of the inventory control, that is the improvement in customer relations. And the next is smooth and uninterrupted production and hence no stock. So it will also contribute for a smooth and uninterrupted production. Uninterrupted production का मतलब क्या है कि basically यहाँ पे production process जो है that will be continued, there are no interruptions and hence no stock. Stock out means ऐसा ना हो कि किसी भी material का stock आपके पास available नहीं है और you are out of stock, stock out हो गया, so that will lead to the interruptions in production. So basically इंटरप्शंस नहीं होने चाहिए, दैट विल बी पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वेंटरी कंट्रोल. अगर हम इन्वेंटरी कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू स्मूथली एंड to maintain the production continuously or uninterrupted production, it will not be possible. So the next is efficient utilization of working capital. So the working capital will also be efficiently utilized using the inventory control. And the next is helps in minimizing loss due to deterioration, obsolescence, damage, filtrage. So in सब की वजह से जो भी हमारे loss होते हैं, that will be minimum just because of the inventory control. Then the economy in purchasing. So whatever the items or the materials are purchased, exercising the inventory control, so there will be economy in purchasing also. And the last is eliminates the possibility of duplicate order. Duplicate of ordering के chances बहुत कम होंगे or it will not be possible. There is no possibility of the duplicate ordering of the materials. So that's all for inventory control and the material management. So thank you all for watching this video. Stay tuned for more video lectures. Thank you.